Hello friends, welcome to Spectra Core Academy. We will be having a detailed revision of how to file application for CBLR exam 2024. As we have already given the description for filing the application for CBLR exam in 2021, this is a detailed revision of the same. CBLR exam, Custom Broker Licensing Regulation exam. The application is invited from National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Faridabad. In short, we call it NACIN. Custom broker license is used for import-export work and for giving the consultancy to the importers, exporters, and freight forwarding firms. This exam can be given by professional degree holders like MBA, CS, LLM, and industry persons holding G card with 2 years work experience. The application is invited from NACIN, known as National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics. This can be also one of the MCQs. Based on the notice given on 23rd August 2023. And based on this notice, all other commissionerates that are based at Delhi, Chennai, Bangalore, Kolkata, Mundra, Ahmedabad, Vijayawada, Tuticorin, Hyderabad, Uttar Pradesh and Uttarakhand, and several other locations released their respective notifications for the CBLR exam. Now we will be going through the original notice that was given by NACIN, and thereafter we'll take up the Delhi notice. Also, we will see the other notices that are given by other commissionerates. अब हमें जो अपना एप्लीकेशन फाइल करना होता है वो हमें बहुत ही सीरियसली फाइल करना होता है. कई बार सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है. इन 2018 itself 60% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई थी और 40% एप्लीकेंट्स ही फाइनल एग्जाम तक पहुंच पाए थे. कभी कभी जल्दबाजी में या फिर सीरियसली ना देखने के कारण या फिर उसको एक रेगुलर वर्क समझ के कई बार हम बहुत स्मॉल मिस्टेक्स कर जाते हैं. जैसे कहीं पर एप्लीकेंट को सिग्नेचर करना है फाइनल, उसने वहां पे सिग्नेचर नहीं किया एंड मेकिंग इट अ पॉइंट द एप्लीकेशन गेट्स रिजेक्टेड. कहीं पर फोटो अटेस्ट होनी है, नहीं हुई, मिस हो गया, एंड दैट बिकम्स अ पॉइंट फॉर रिजेक्शन. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देर आर मैनी एंट्री बैरियर्स which we have to take care of, and we have to file our application very seriously. So taking up with the NACIN notice, applications are invited from the Indian citizens to appear in the online written examination for issuance of license to act as custom broker under Custom Brokers Licensing Regulation CBLR 2018 as amended. इनिशियली CBLR जो रेगुलेशन मिला हमें 2018 में, वो अमेंड हुआ 2019 में with the few changes. One of the important changes that earlier the examination was being conducted by DGPM, Directorate General of Performance Management. Now the examination is being conducted by NACIN, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Faridabad. Now the complete application is to be submitted in person or by registered or speed post in Form A, available in CBLR Regulation 2018. Now, you can send the application by registered or speed post, but it is advisable that you go and submit in person, so that if there is any mistake, you can rectify it on site and submit your application so that you remove the chances of any rejection. So the complete application has to be submitted in Form A along with 2 passport size photos and self-attested documents on citizenship like Aadhaar, passport and voter ID card. Educational qualification, financial viability, mobile number, email ID and other requirements along with prescribed fees of ₹500. 2. The Principal Commissioner or Commissioner of Customs or Commissioner of Customs Preventive
having jurisdiction over the area where the applicant intends to carry on his business from 18th October to 17th November 2023 up to 6 p.m. Applications sent by post in case received after the last date shall not be entertained. इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आप इन पर्सन जाइए और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करिए, बिकॉज अगर आपने बाय पोस्ट भेजी और आपकी एप्लीकेशन 6 बजे के बाद रिसीव होती है तो वो एंटरटेन नहीं करी जाएगी. Before submitting the application, applicant should ensure the completeness of the application. Incomplete applications shall be summarily rejected. So अगर आपका एक कोई पॉइंट मिस हो गया बीच में, कहीं आपकी सिग्नेचर नहीं है या आपकी फोटो में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. तो आपको बहुत ही सीरियसली सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना है. देन यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन इन पर्सन, विच इज एडवाइजेबल. Syllabus of the written examination will be as per Regulation 6, Sub Regulation 7 of the CBLR 2018. इसको हम देख सकते हैं. ये हमारा CBLR रेगुलेशन है. इसका रेगुलेशन 6 को हम देखें तो रेगुलेशन 6 में एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट को कवर किया हुआ है. एन एप्लीकेंट हु सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन 5 shall be required to appear for the written as well as oral examination conducted by National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics. तो इसका कहना यह है कि एग्जामिनेशन वही एप्लीकेंट दे सकता है जो कि रेगुलेशन 5 के टर्म्स को सेटिस्फाई करता है, एंड देन he can give the written exam as well as the oral exam. नाउ इफ ये तो रेगुलेशन 5 जो है वो कवर करता है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को. रेगुलेशन 5 कहता है कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द एप्लीकेंट्स, दैट द एप्लीकेंट फॉर द लाइसेंस टू एक्ट एज कस्टम्स ब्रोकर इन अ कस्टम स्टेशन shall before applying to the principal commissioner of customs or commissioner of customs meet the following conditions. पहला, he is a citizen of India. Second, he is a person of sound mind. Third, he is not adjudicated as insolvent. D, fourth point, he holds an Aadhaar number. Fifth, he holds a valid PAN card. Sixth point, he has not been penalized for any offense under the Act, Central Excise Act, CGST Act, or the IGST Act, Finance Act. Seventh, he has neither been convicted by a competent court for an offense nor any criminal proceedings is pending against him in the court of law. यानी कि उसका कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, उसको कभी कन्विक्ट नहीं किया गया है, उसका कोई पेनलाइज नहीं किया गया, उसे कोई दंड नहीं दिया गया है किसी भी प्रावधान में. तो इन सबको, ये जो कंडीशंस फुलफिल होनी है, इन सबको एक डिक्लेरेशन के फॉर्म में भी सबमिट करना है एप्लीकेंट के साथ में. इसके अलग से हैं फॉर्मेट दैट विल बी शेयर्ड soon with the video. फिर an individual applicant, or in the case of applicant is a firm, its partner, or in the case of company or director or authorized employee, he must be a graduate from the recognized university and possess the professional degree such as master's or equivalent degree in accounting or finance or management, CA, CS, MBA, LLM, ACMA, FCMA, or diploma in custom clearance work from any institutes or university recognized by the government, or is having at least 2 years experience in transacting customs broker work as G card holder. तो अगर आप प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं या आप इंडस्ट्री पर्सनल हैं कि आपके पास जी कार्ड है और आपके पास 2 साल का वर्क एक्स है, तो आप इसके लिए अपीयर कर सकते हैं. प्लस आपके पास एक फाइनेंशियल वायबिलिटी होनी चाहिए, और एनी अदर प्रूफ दैट मे बी एक्सेप्टेबल टू द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स in terms of possession of assets of not less than 5 लाख रुपीस. आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी 5 लाख की होनी चाहिए. अब ये बैंक से भी सॉल्वेंसी आती है और सीए भी आपको लिख के दे सकते हैं. कुछ कमिश्नरेट्स सीए के लेटर को एक्सेप्ट करते हैं, जैसा कहा गया है एनी अदर प्रूफ एक्सेप्टेबल टू कमिश्नर ऑफ कस्टम्स. तो कुछ कमिश्नरेट्स हैं जैसे बॉम्बे के, वो सीए के सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो आपको अपने लोकल कमिश्नरेट से ये बात कंफर्म करनी होगी. और many other commissionerates like Delhi, they say that you should get it from the bank. बैंक में आपने FD रख दी 5 लाख की और आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा बैंक से. So you have to consult your local commissionerate, जहाँ पे भी आप हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मुंद्रा, अहमदाबाद, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आप
को अपने लोकल कमिश्नरेट से ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी। एंड सेकेंडली आपके अगर IRS ऑफिशियल हैं, वो देना चाहते हैं, दे मस्ट हैव अ मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस इन ग्रुप A to apply for this license. Many people do. We have several examples. And so फिर हम एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई होती है, नेसन वेरीफाई करता है, एंड देन दे आर अलाउड फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सिलेबस कवर होता है। सिलेबस की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ बिल ऑफ एंट्रीज, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल्स, other clearance documents, arrival, entry and clearance of vessels, tariff classification and rates of duty, determination of value of imported and export goods, conversion of currency, nature and description of documents to be filed with various kinds of bill of entry, shipping bills and other clearance documents, procedure for assessment and payment of duty including refund of duty paid, examination of goods at custom station, prohibitions on import and export, bonding procedure and clearance from bond, reimportation and conditions for free entry, drawback and export promotion schemes, including the special economic zone scheme, offenses under the Act, provision of allied act like CGST, IGST, Indian Explosive Act, Destructive Insects and Pests, and several others, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, Foreign Trade Development Regulation Act 1992, Foreign Exchange Management Act, Food Safety and Standards Act, Intellectual Property Rights, Prevention of Corruption Act, Procedure for the Appeal and Revision applications under the Act, online filing of electronic bill of entry and shipping bill by the Indian Customs and Central Excise Electronic Commerce Gateway, ICEGATE, and ICS, Indian Customs Electronic Data Interchange System, knowledge of regulations, rules, notifications, etc. under the Customs Act and other allied acts. Now, all these things are covered in the Customs Act, Customs sections, Bear Acts, you can say, and the Customs Manual. You need to understand, learn, and revise these things. For revision, we have app, Android app, that you can download on your mobile and you can practice for all the sections, for all the acts, and several other multiple choice questions that come in the exam. So this is all about the syllabus. Now coming back to the original notice. Syllabus covered under the Regulation 6, Sub-Regulation 7, CBLR 2018. Now, names of the applicant that are found to be eligible in the examination will be displayed on the notice board and or the website of respective commissionerate latest by 8th December 2023. Information regarding the roll number, admit card, and examination venue will be made available on the website of CBIC and NACEN under the icon CBLR exam. And a link to download the admit card will also be available there. Admit cards shall also be sent by mail to the eligible applicant 12 days in advance before the date of exam, and the written examination shall be held in the month of March 2024. The candidates shall have the option to answer either in Hindi or in English. Successful candidates will be called for oral examination, for which separate communication will be sent. Those who clear the written examination shall be called for the oral examination. In case declarations and information submitted by the applicant are found to be incorrect, the application shall be cancelled or rejected. And for any query regarding the eligibility and process of application, please refer to the regulations available at the website of CBIC and nacen.gov.in. So this is about the original notice that was given by the NACEN. Now we'll take up the other annexures. This is the notice that is given by the New Delhi Commissionerate. And further, we have this the notice given by the Chennai Commissionerate. This is given by the Mumbai Commissionerate. This notice is given by the Kolkata Commissionerate. This notice we have from Visakhapatnam, from Hyderabad Commissionerate, from Ahmedabad Commissionerate,
from Mundra. And this is the combined notice given by the Uttar Pradesh and Uttarakhand Commissionerate. Office of Commissioner, Customs, Preventive, Uttar Pradesh and Uttarakhand, located at Lucknow. So we have all the respective commissionerate notifications. Now we will take in detail the New Delhi Commissionerate, where we are located. Attention of all concerned is invited to the notice dated 23rd August for Custom Broker Examination 2023 issued by National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Faridabad. Available on website cbic.gov.in and nasin.gov.in. Applications in Form A along with 2 passport size photos and self-attested documents on citizenship like Aadhaar, passport and voter card, educational qualification, financial viability, mobile number, email ID and other documents along with a prescribed fees of ₹500 paid through TR6 Challan. This Challan is available in the bank, Punjab National Bank at the Commissionerate, which is located in Mahipalpur, Delhi. And for your all other local commissionerate, you need to contact the bank that is located in your commissionerate and fill this TR6 Challan. To the paid through ₹500 fees paid through TR6 Challan to the Commissioner of Customs, Airport and General, New Custom House, New Delhi, is to be submitted in person at the centralized dark system counter, ground floor, in the office of the Commissioner of Customs, Airport and General, New Customs House, near IGI Airport, New Delhi 37, or by registered or speed post. However, it is advisable, ये advice है कि आप in person ही submit करिए, so that if there is any mistake that can be pointed out at the last moment can be corrected. So the applications must reach up to 6 PM on 17th November 2023. तो कोई भी जल्दबाजी मत करिए, अच्छे से चेक करिए, रिवाइज करिए सारे पॉइंट्स को, और इन पर्सन आप 17 नवंबर तक अपनी अपडेटेड और फाइनली करेक्ट एप्लीकेशन को सबमिट करिए. अगर आप लास्ट डेट के बाद आपकी एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुंचती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी. Before submitting the application, applicant should ensure the completeness of the application, as incomplete applications shall be rejected without any notice or deficiency memo issued to the applicant, and no correspondence in this regard shall be entertained by this office. So आप अच्छे से चेक करिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैंने बना लिया, मैं 2 दिन के अंदर कर लूंगा, 5 दिन में कर लूंगा, इनिशियली कर लूंगा, जैसे ही नोटिस आया वैसे ही मेरे को सबमिट करना है. कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, और बहुत ज्यादा देर भी नहीं करनी है, पर आपको सारे पॉइंट्स चेक करने हैं. अगर आपका कोई भी पॉइंट सिली मिस्टेक की वजह से भी मिस हो गया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, एंड देन यू हैव टू अप्लाई नेक्स्ट ईयर. Regulation 5 of CBLR 2018 prescribes a condition to be fulfilled by the applicants which are extracted as under. जैसे कि हमने अभी चेक किया था रेगुलेशन 5 को, that he is a citizen of India and person of sound mind and not adjudicated as insolvent, holds an Aadhaar number, holds a valid PAN card. यही पॉइंट को यहाँ पे कवर किया गया है. Names which are found eligible to appear in the examination shall be declared on the notice board or website of the respective commissionerate by 8th December. Now the examination, the online written examination will be a computer-based exam with multiple choice questions, MCQs of 2.5 hours from 10:30 AM to 1300 hours. 10:30 से 1 बजे का एग्जाम है. Questions will be bilingual in English and Hindi. The pattern of the examination shall be as follows. Number of questions will be 150. Marking scheme is +3 for each correct answer and -1 for each incorrect answer. Maximum marks 450, qualifying marks 270, that is a 60%. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूपहोल है कि नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का स्कोर कम हो जाता है, उन्हें नहीं पता लगता है. इसके लिए ही हम लोगों ने एक एंड्रॉयड ऐप बनाई है. एंड्रॉयड ऐप काफी समय से चल रही है. 2019 में जब इनिशियली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न आया था, तब से हमारी एंड्रॉयड ऐप है. बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया है और दे हैव गॉट सक्सेसफुल. आप भी डाउनलोड करिए ऐप को और आप सारे जो क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में क्योंकि वो एक सेट पैटर्न पे बने हुए हैं, एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो उसमें कवर किए गए हैं.
एंड धीरे धीरे हम इसको अपडेट भी करते रहते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। एक हमारे कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। द मोर यू प्रैक्टिस दैट may make you perfect, and that is the only key for success in this exam. So I request you to download the app and practice the MCQs given in the app for getting successful in the examination. The syllabus is already given in Regulation 6, Sub-Regulation 7 of the Custom Broker Licensing Regulation 2018, as we have already seen. And those who clear the written examination shall be called for the oral examination. The pass percentage is 60%. Attention invited to the guidelines of dated 29th August 2018 issued by Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Divyangjan, and circulated by CBIC wide letter dated 10th October 2018 pertaining to persons with benchmark disability. इसमें जो persons disabilities के साथ हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट आउट करते हैं तो उनके लिए कहा गया है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये पैराग्राफ नहीं एप्लीकेबल है। वी कम टू द 10th पैरा। अ डमी क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल होता है February 2024 में ये डमी क्वेश्चन पेपर, जिसे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। एंड अ लिंक टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। In case declaration and information submitted by the applicant are found to be incorrect, the application shall be rejected or license shall be cancelled. This is all about the Delhi Commissionerate, and same for all other Commissionerate regulations. Notifications are there. You can go through all these notifications. We'll be uploading soon. Now, if we look into the attachments that we need to submit, आपको एक एक्सेल शीट में ये डॉक्यूमेंट बनाना है। आपका नाम, आपका आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड योर डिजिटल फोटोग्राफ। एंड देन ऑल्सो यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म एंड यू हैव टू पेस्ट योर फोटो। आपको अपनी फोटो लेनी है, पेस्ट करनी है ताकि उसको रिमूव किया जा सके, और वो आपका एक डिजिटल कॉपी भी आपको इसकी एक सबमिट करनी है। तो ये एप्लीकेशन आपको बनानी है। ये फॉर्म ए है जिसे आपको TR6 चालान के साथ आपको सबमिट करना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका जो नाम है, आपका फुल एड्रेस, आपका आधार नंबर, नेम ऑफ ऑल द पर्सन्स और डायरेक्टर्स ऑफ द फर्म, all of the person who will be engaged in the custom broker work, educational qualification and total number of attempts, आपकी वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है। अगर आप गुजरात से कर रहे हैं तो गुजराती आपकी लोकल लैंग्वेज है, इफ यू आर कन्वर्सेंट विद दैट। अगर आप साउथ से कर रहे हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज है, कन्नड़ है, वो आप उसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यू कैन मेंशन योर लोकल लैंग्वेज इन विच यू आर कन्वर्सेंट, लाइक कन्नड़ एंड अदर तेलुगु और अदर लैंग्वेज, and mostly write English and Hindi. And declaration for this language have to be given. Declaration that you have not earlier applied for license to act as custom broker. No such application was rejected or accepted. The firm or company by whom the undersigned is employed have earlier held custom house agent or custom broker license under the CHLR to 1984, CHLR 2004, CHLR 2013, and all these regulations, it was cancelled, suspended, not suspended. And the undersigned and the persons proposed to be employed have not been penalized, convicted, or prosecuted under any of these laws, like Customs Act, Central Excise Act, Finance Act, educational documents, and the financial documents, and you have to sign it. तो ये आपको देने हैं। अदर जो आपके ड्यूली नोटराइज्ड एफिडेविट्स देने हैं, दैट यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, योर पर्सन विद साउंड माइंड, not adjudicated as an insolvent, not convicted by the competent court, not been penalized by any offense under the act. 2 passport size photographs, self-attested copy of Aadhaar card, PAN, passport, voter ID card, certificate issued by the registered medical doctor, government civil surgeon, and the person is of civil sound mind. आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मैंडेटरी है इस एग्जाम को एलिजिबल बनाने के लिए, लाइक CA, CS, MBA, LLM,
or your G card holder with 2 years work experience, and your bank solvency certificate of 5 lakhs issued by the chartered accountant or by the bank, and the declaration